Hi everyone, this is Infi Desires Doodle, your number one place for doodles, calligraphy, DIY and hand lettering videos. Today's video is Doodle series part 10, so let's get started. तो आज के वीडियो के लिए बहुत ही सिंपल मटेरियल्स चाहिए. I have taken this A5 size black paper notebook बोल सकते हो. I have a white pencil, DOMS का color pencil, and I've taken this Unipin Signo 0.7 white pen जो मेरे पास है. सबसे पहले what I'm going to do is I'm going to make a layout of what I want to letter with my white color pencil. ब्लैक पे वाइट ही इफेक्टिव लगता है एंड यू कैन नॉट यूज एनी अदर पेंसिल, बट व्हेन यू डू इट विद अ वाइट पेंसिल और अ वाइट पेन ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. सो मैंने यहाँ पे वर्ड बिलीव लिखा है एंड आई एम गोना डू फॉर कैलीग्राफी. इफ यू डोंट नो व्हाट फॉर कैलीग्राफी इज, आई हैव अ फुल वीडियो ऑन दैट, गो चेक इट आउट. एंड बहुत सिंपल है टू डू दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई वॉन्टेड टू शो यू हाउ टू डू फॉर कैलीग्राफी एंड देन हम ऊपर और नीचे थोड़ा डिजाइन करने वाले हैं. Again with making outlines with white color pencil and then you can do it with a pen. So आज का हमारा वीडियो है ये doing doodles or making doodles and calligraphy lettering for calligraphy on a black slate paper. Now a quick tip while you're doing this white pen को, because ये gel pen जैसा है, it takes time to dry, so make sure कि आप थोड़ा time wait कर रहे हैं and your hand is not going over the areas जहाँ पे आपने already pen use किया है, because otherwise वो smudge हो जाएगा. So another tip is if you want to use your hand over the areas जहाँ पे आपने already आपका artwork करा हुआ है, you can use a small piece of paper, a clean piece of paper, so that अगर आपके hand पे कोई residue है, any other color, anything else, then वो आपकी final art piece पे नहीं आएगा. So I'm using this white small paper and making the other side. So this is how, after touch up and everything and after the artwork is completely dried, this is how your doodles and lettering would look on a black paper. Thank you so much for watching the video. I hope you liked the video. Don't forget to hit the subscribe button, the like button, and do share my video. Stay healthy, stay safe. I will see you soon in the next video.